चलिए, आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम कृष्णा प्रिया है और मैं बेसिकली छपरा बिहार से हूँ। मेरी स्कूलिंग और एजुकेशन सारा धनबाद से है। सर, if you allow me to speak my introduction in English would be more comfortable in it. वैसे मैं बोल दूंगी हिंदी में, but that won't sound that better. So, am I audible, sir? Yes, audible. You can speak in English. Thank you for the permission. Myself Krishna Priya. I'm basically from आपका नेटवर्क आवाज नहीं आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है आप। and college education from is it audible now? No, your voice. No. Shall I continue, sir? Okay, go on. Shall I continue? Is it audible now? Yes, okay. So am I audible? Yes. Okay. I have completed my schooling from Dhanbad and my college education from Dhanbad itself. So after my graduation, I have completed my LLB from Dhanbad Law College. As far as my hobbies are concerned, I like cooking and gardening. And after my LLB, I have started my preparations for APO and judicial services, and have been preparing for Bihar. For Bihar judicial and APO, have been preparing since then. Okay, Krishna Priya, just tell me about the procedure of arrest. What is the procedure? First of all, we need to see what kind of offense it is. If it is a cognizable one, then the police officer may not require any permission from the magistrate to arrest the accused, and he can arrest the accused under Section 41 of the RPC. After the arrest, the police officer would be telling him about the offences for which he is being arrested, and he would be the police officer, while making the arrest, will make the arrested person to sign a memo of arrest, and by any of the family member if he has been arrested from his house, or if he has been arrested from outside, then from some of the person from the locality. After the arrest, the person nominated by the arrested person should be informed about his arrest. The person arresting him must wear a badge. I mean, the name plate stating the name of the person who is arresting. I mean, that to show the authority of the person who is arresting him. Touch or unnecessary restraint should not be applied while doing the arrest of a person, while arresting any person. And if a female needs to be arrested, then in that case, before sunset, after sunset and before sunrise, she should not be arrested. And if any circumstances arises wherein that has to be done, then in that case, the authority from the magistrate is required. Just tell me something about the directorate of the prosecution. Is there any under CRPC? Of CRPC, we have the provisions for Directorate of Prosecution, who shall be head for the prosecution officers in the state. Sir, just one request. I'm not able to see who is asking the question. I myself is able to see only my video. I'm not able to see all of yours.
any setting by which I'll be able to, so that a Issue proper from eye the contact and all. yes. So, what is the definition of dowry? You should switch to gallery view first. Dowry, Switch to gallery view and then try to locate the panel. I think gallery view should do the trick for you. Go to some gallery view. sort to gallery. Yes, there must be some gallery view where all the tiles, all the participants' photographs can be visible. Yes, sir, it can be seen now. Thank you so for guiding me. Carry on. Yes. So we were at the we were talking about the dowry here. Uh, dowry is defined under the Dowry Prohibition Act 1961. I'm sorry, I'm not able to recall the exact year. Wherein the dowry is defined as any kind of demand, either from the groom side or from the bride side, demanded by the person, by the groom or his family member, or by any other person in relation to the marriage. But that does not include the meher given in the Muslim law. So, what is a valuable security which is mentioned in the definition of dowry? Valuable security. Yes, a valuable security has been. Valuable security is a document, if sealed and signed, can be made. Is it audible? Valuable security is a document if after signing it, or if upon doing a seal, if upon applying a seal upon it, it becomes a property. So that kind of document we call a valuable security. It's been provided under 29 of the IPC. Not sure. Section? 29. No. 30. I'm sorry. I'm so sorry, sir. I'm not able to recall it, the exact section. Is there any difference between document and valuable security? Yes, sir. A valuable security, if signed, becomes a document. If signed, and it extinguishes, creates, or diminishes, or alter any kind of right or interest in it, in any property of a person. So, check is a document or a valuable security? It's a document upon which, if by signing or by putting a seal upon it, and it carries out the. I'm just asking you a very simple question. Check without sign is a document or a valuable security? Check without sign is the document. After signing it, it becomes valuable security. Or deed, we can see a lease deed, or okay. Thank you, sorry. Krishna Priya. Thank you, sir. थैंक यू। ओम प्रकाश है? Sir. ओम प्रकाश आ रही है मेरी? हाँ, आ रही। ओम प्रकाश ये मुझे आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, आप बोलो, सब ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि ए के पास 2 मकान है और उसके बीच में करीब 12 फीट की रोड है और बिल्कुल आमने सामने फ्रंट पे दोनों मकान हैं। वो क्या करता है, उस पे कुछ बल्लियां उल्लियां लगवा के और ब्रिक्स, सीमेंट, छड़
तमाम रफ चीजें कैरी कराता है इधर से उधर, बीच बीच में कुछ ईंट के टुकड़े गिर जाते हैं। इस कंडीशन में एक के अगेंस्ट कोई ऑफेंस का एलिगेशन लग सकता है? न्यूसेंस जी, न्यूसेंस का सर, अगर वो पब्लिक न्यूसेंस, वे है तो न्यूसेंस। जी सर। न्यूसेंस का लक्षण। और आईपीसी में और कोई सेक्शन अट्रैक्ट होता है? मिसचीफ। मिसचिफ में क्या उसको किसी प्रॉपर्टी का कोई डैमेज है क्या उसमें? सर प्लीज कैन रिपीट द क्वेश्चन। आवाज कर। वहाँ पे रड और छड़ गिर जाते हैं रास्ते के ऊपर में, मैं वो समझ नहीं पाई सर। अच्छा, कभी कभी गिर जाते हैं, वैसे लोग बीच बीच में चले जाते हैं बचते बचाते हुए। पब्लिक न्यूसेंस सर हाँ, आप बता रही हैं। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये 139 में आई थिंक इसको। जी सर, पब्लिक न्यूसेंस 139 में यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में अगर हम लोग बोलेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन, इस तरह के किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या डेंजर को हटाने के लिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वहाँ पे अगर वहाँ पे अगर मैं मेंशन मैं- किया जाए आ, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अब मैं रिमूवल के मैं लिए ऑर्डर सिर्फ पास कर सकते हैं और सुनिए, इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकते हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आईपीसी में क्या ऑफेंस जी सर। बन सकता है, क्या उसको एलिगेट किया जा सकता है? तो आपने बताया पब्लिक न्यूसेंस, उसके अलावा कोई और ऑफेंस? आपने मिसचिफ भी बताया। चलिए, 336 आईपीसी देखा है कभी? 336, 336। 336 देखिए, लाइफ इन डेंजर में पड़ने की प्रोबेबिलिटी हो। आसपास में है अभी। अच्छा ठीक है। आप जी सर। ये बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ क्या एविडेंस एक्ट में डिफाइन है? डेफिनेशन तो एग्जैक्ट ओनर्स ऑफ प्रूफ का नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है, ये 101 में है और 102 में ओनर्स ऑफ प्रूफ इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बताते हैं कि अगर वो प्रूफ ना करे तो फिर इट विल गो अगेंस्ट हिम। तो में है बट एग्जैक्टली दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड। अच्छा, आप डिफरेंस बताइए वो दोनों लाई में। करता है वो मेंशन किया। दोनों तो में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डिफरेंस। रहता है कि जो केस को इंस्टीट्यूट करते हैं सर, जो इंस्टीट्यूट करते हैं वो उन पे लाई करता है कि अगर वो प्रूफ ना करे तो वो हार जाएंगे। जबकि ओनर्स और वो इनिशियल स्टेज पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ यूजुअली आता है, जैसे प्रोसिक्यूशन के ऊपर में बेस होता है क्रिमिनल में, और सिविल में अगर हम लोग जाएं तो यूजुअली प्लेंटिफ पे रहता है। लेकिन ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो कीप्स ऑन शिफ्टिंग। जैसे अगर हम लोग प्रिजम्पशन में देखेंगे तो अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है किसी चीज को, तो वो जैसे 105 में कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि एब्सेंस ऑफ प्रिजम्पशन। जब एब्सेंस ऑफ प्रिजम्पशन बोलता है तो यहाँ पे फिर एक्यूज के ऊपर में शिफ्ट कर जाता है। जब एक्यूज कहता है कि नहीं, आई वॉज नॉट इन साउंड, आई वॉज नॉट अ साउंड माइंड, या फिर मैं आई वॉज अंडर इंटॉक्सिकेशन, तो मैंने ऑफेंस को नहीं किया है, तो यहाँ पे फिर वो उसके ऊपर में शिफ्ट कर जाता है जो उस फैक्ट को असर्ट करता है। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ कीप्स ऑन शिफ्टिंग होता है, जैसे फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से वो चेंज होते रहता है। जबकि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन पे लाई करता है जो जजमेंट को अपने फेवर में चाहता है। ये
बेसिक डिफरेंस जो मैं समझती हूँ। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक 6 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ सोई हुई है और सुबह उसकी डेड बॉडी पाई जाती है, जिसमें उसके हेड पे बिल्कुल उसको डिसफिगर कर दिया गया है और कपड़े वगैरह भी नहीं है। तो ऐसा केस लगता है कि रेप मर्डर का है। और ये सुबह में 6 बजे में उठने पे पिता को लगता है कि बेटी तो दिख नहीं रही है, तो वो बाहर जाता है, तब देखता है कि जो है वहां पे। और रात में करीब 2-3 बजे के आसपास में उसी गांव के एक आदमी को किसी ने उधर से जाते आते देखा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोसिक्यूट किया जाता है 376 302 के लिए। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और उसमें कोर्ट एक क्वेश्चन फ्रेम करती है कि आप रात को 2 बजे खुला डेट में वहां देखे गए थे, आपको क्या काम था और उसके बाद से आप 6 बजे तक कहाँ रहे। वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री उसका जवाब नहीं दे पाता है। तो ये जो उसका आंसर 313 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड में आया है, क्या इस पे कोर्ट कोई एडवर्स ओपिनियन फॉर्म कर सकती है? यस सर, 106 में इसमें लॉस इन सिक्योरिटी नहीं, बट यस, अगर जैसे कोई एक फैक्ट जो किसी एक पर्सन की विद इन हिज नॉलेज है, अगर वो पर्टिकुलर फैक्ट, तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर में लाई करता है। कोर्ट में कंसीडर कैन यस सर, गेट वेरीफाइड। ओके, देयर शुड बी 106 ये तो नहीं, वेरी गुड। 106 की मदद से ही ये क्वेश्चन जो है कोर्ट को ये पूछने का अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ओझा जी। या थैंक यू। यस कृष्णा, प्रिया, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, आ रही। What you did? What's your education qualification? Sir, I'm graduate with English honors and LLB, that's all. Have not done anything else. What's your subject in the graduation before BA? अभी चल रहा है, आप पूछ लिए LLB किया सर मैंने, LLB and English honors से graduation sir. Your 5-year law course or your 3-year law course? Law was for 3 years. Okay. How many exams you have given before this? Sir, as of now, I have written 5 mains, have attended 1 interview, and this is gonna be my second interview. Okay. My interview, previous interview was with West Bengal Judicial Service. Bengal Judiciary. Wherein, yes sir. You are from Bengal? No sir, I am from Bihar, but I have been studying here in Dhanbad as my father works here, and then after my husband also has business here. What your husband is doing? Reason have been staying. What your He is husband a doing? businessman. Huh? He's a businessman, so he deals in furniture. Why you want to become APO? What's the purpose? So it's not about becoming an APO. Let me be my answer very honest here. I'm already 33, 34, and my age is almost up for services, the government services relating to this lawful. So what I'm trying here is to get a job and like put an end to my struggle in the sense for appearing for the examination, because I'm already set in my personal life, as in I have a son and a daughter. So I just want to give a smoothness, as in I want to focus more on my work rather than competing in examinations and appearing for more examinations.
So whichever job I'll get first, I'll try pursuing the same and will try doing my best to it. And for judicial services, it requires more hard work. And as I do have my family also, and I'm burdened with those responsibilities, so I'm not able to give much time to my judicial preparations. So I believe APO examination, I'll be like less effort is required, which I'll be able to so for the same, sir, APO is more preferable at this point of time, seeing my personal situation as in the household responsibilities also have confined me. So What was my question? this is my honest. What was my question? Why do I want to become an APO? And what is your answer? Have So you answered my question? I tried becoming honest. Have you answered my question? Yes or no? You tell me. So now I The first advice I will give you, Krishna, that you I answer have only not what has been in asked. direct way, but so I want to be in law field. Pardon? Sure. The first advice I will So give. I have studied in law. I want to be in a law field. Yeah, listen my question again. My question was very simple. Why you want to become APO? You have not answered that question. You have started saying how much exam has been given. My job, my age is going to be over. I am from Bengal. My husband is businessman. Does these answers are have some relation with that question we asked? Why you want to become APO? You can simply say that I want a job. Are you listening me? Hello? Yes, sir. Are you listening me? Yes, sir. I'm listening, sir. Audible. I Yes, sir, asked a yes. question, why you want to become APO? You can give the simple answer. I want a job. There's you how old But I daughter thought, you sir, have? it would be How old daughter you have? What is the age of your age daughter? 7 years, sir. 7 years. 7. When you become the APO, can you able to manage the future of your daughter and your career? Yes, sir. I'll be able to. How? Sir, I give time to my family as well as my study. Almost 7 to 8 hours. I try giving my time to my studies. So by the same You have time, been I'll be able you to have give been my transferred to a job you have been also. transferred to a remote area. You have been transferred to a remote area. What will do? Suppose right now you are Sir, Patna. I have no issues because my daughter is attending the online classes. She is not in offline. Okay, my last question. She is doing online classes, sir, so I have no issues with that. Just give answer last question. Have you heard about the women's reservation bill? Yes, sir. What is this? What is this in this bill? In this bill, it has been mentioned there as the 33% reservation should be given to the women for parliamentary seats and for Rajya Sabha as well as for Lok Sabha. Why it is being introduced? Because women were not properly represented, and women come up more in the Parliament House as it was as a woman can address in a much better way than a man the By problems giving relating to. by giving reservation to the women in the parliament and assemblies will enhance the stature of women in India. I believe yes, that it will be able to. It is the only way to enhance the stature of the woman in India. No, sir, that is not only the way. The education is the one other alternative which can enhance the condition of women in India. So why government is not giving reservation in the education? 33% reservation should be given to education.
Why in the parliament and assembly you are saying the education is more important? I said this can be an alternative. Okay. Thank you. Thank you. Short आपका हो गया? हाँ, sorry, come. Sir, बाकी है sir. Yeah. See, let me. I think. Are you able to hear me? Yes, sir, very much. Yes. There are 2-3 things straight away I would like to bring to your kind attention, because apparently what I perceive from your persona and your demeanor, that you have really worked hard. You're a very hard-working person. I know that already from my limited interaction and watching how you are responding. That is very good. But what happens, that perseverance has to meet presentation. That is the beauty and charm of personality test, isn't it? You will also agree that perseverance of character that has to meet presentation also. So when it comes, I will not. I am not the best authority to judge about perseverance, but as a part of this August panel, it is my duty to tell you that the first thing you should work upon is never answer something that has not been asked. Never ever. That will benefit you immensely. Some 20-30% enhancement or improvement in your score will happen right away. Right away, this single input can help you immensely. Never stretch or answer anything that has not been asked. But how do you know? How do you know what has been asked or what has not been? You know that by listening to the question carefully and then judging its scope. If you do not listen to the question carefully, do not give yourself time, you do not allow your brain to find out what keywords is he expecting or is she expecting from my side. Unless you have visualized the keywords of your answer in the first 3-4 seconds, the answer would get derailed initially, and it will take, ultimately you will have to spend those 10-20 seconds, and then you will come back. You will finally come back to answer. That is exactly what is happening. You are coming back to the core answer, but after 4, 5, 6, 10 sentences, then you are coming there. So the first decision that you need to take is, I'll listen to the question carefully, try to judge the scope and purview of this question, and answer straight away. And answer in general terms. I will not elaborate unless I am asked by the panel to do so. That is, these are the important decisions. Mentally note down कि अब मुझे ऐसे करना है आगे. I'll not speak about anything that has not been asked. Number one, I'll not speak anything more than that is required. Number two, but these two things depend upon your patience and your focus to listen to the question carefully. That is one thing. Okay. I can give you specific examples also, because you would ultimately, replay this video that we are recording right now. So you will realize, for instance, you were answering about dowry. Respected answer was asking about dowry or something. And then, because it was not very audible, so I could not hear everything, but I found that there was a great sense of disproportion also. And then something like this you said, I'm not sure. You said something, I think about the year. It was about some year or some section or provision. It was about You said, the I'm not sure. year of the act. Year it was, year, yes. And that year was not even asked. Nobody asked you about that. But you had to cut a sorry figure because you unnecessarily introduced that element into your answer. Nobody asked that. Isn't it? Priya, what Shaur is saying, I'm just adding it. You are not listening question carefully. Shaur is saying perfectly right. You just listen the question carefully. The observation of Shaur is perfectly fine. He's on the right, because we have done this job since number of times. Shaur has given a lot of advices to earlier pieces just parent also. I advise you see that video also. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Sir. So that is one part. Okay. The first part of my advice on the basis of today's experience with you is that you should be very sharp and focused, which you generally are. As a matter of attribute, you have that. But what I am saying, to make it a habit,
to use it during that process of 10, 15 or 20 minutes, as long as the interview continues. That you have to make it a habit. You have to train your brain according to that. That's the issue I'm drawing your attention to. I think you understand what I'm saying. So this has to be a habit, even if it is a temporary preparation for, say, whenever your interview is. For a month's time, you train yourself differently. That's what I am saying. ट्रेन इट वेरी प्रोफेशनली कि नहीं कुछ नहीं है कई बार होता है ना कि मेरा नेचर ऐसा है मेरा नेचर वैसा है पीपल थिंक कि नहीं मेरा टाइप ही यही है होगा ओके फाइन दैट्स फाइन लेकिन इस हार्डकोर प्रोफेशनल की तरह यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन these are the rules of the game you will follow those rules and then you will get through as simple as that okay so also believe in the trainability of your mind human mind is an amazing thing so believe in that work on it and you will start performing nothing to worry number one is listen to the question carefully number two try to judge what are the keywords that should form the part of your first sentence as you speak तब तक बोलने का जरूरत नहीं है 3 to 4 सेकंड यू टेक उससे ज्यादा का समय लगने लगे 3 से 4 सेकंड से अधिक का समय लगने लगे सोचने में रेस्पेक्टफुली सीक देयर टाइम may I have a few seconds sir to frame my answer that's perfectly fine take your time फिर अगले 4 सेकंड में भी नहीं याद आ रहा है then say sorry उनका समय नहीं बर्बाद कराइए 3 सेकंड तो लेने ही आपको फर्दर 2-3 सेकंड और सोच लीजिए टाइम मांग के और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो बोलो कि सॉरी सर आई ट्राइड बट आई कैन नॉट रिकॉल सिंपल मेक इट एज सिंपल ठीक है इज दैट अंडरस्टूड दैट इज वन पार्ट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू थिंक properly before you phrase your first sentence especially in response to those questions the answers of which you know क्योंकि वही वो क्वेश्चंस होते हैं जो स्कोर करवाते हैं जिनका आंसर आपको आता है suppose let me exemplify for the benefit of everybody who has every candidate who has joined us if 10 questions are asked in 3 questions you have to say no or reverse it in 7 questions coincidence you don't know the answer of those questions that can always happen in 7 questions you have to say sorry sir I don't know sorry sir I cannot recall sorry sir I think I have not studied it properly enough to answer ऐसा कहते कहते 7 क्वेश्चन हो गए only 3 questions are there which you could answer now you tell me if you are in a panel and you are entrusted with the responsibility of judging me as a good candidate or a bad candidate for the service what would you judge me upon मेरे कैरेक्टर का डेप्थ मेरी लॉ पे जो पकड़ है मेरे बोलने का तरीका मेरे इमोशंस ये किससे जज करोगे आप जिनके रिस्पॉन्स में मैंने सॉरी बोल दिया उससे जज कर पाओगे नो यू कैन नॉट इट विल बी दीज 3 क्वेश्चंस व्हिच आई आंसर्ड इलैबोरेटली दे आर द विंडोज इनटू माय सोल आरंट दे जिसको सॉरी सॉरी बोल रहा है उस पे तो आप खाली नॉलेज टेस्ट कर रहे हो कि इसको ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता नॉलेज एस्पेक्ट इज वन हाउ वुड यू जज द स्ट्रेंथ ऑफ माय कैरेक्टर how would you judge my suitability for a particular job how would you judge whether I am an open minded person or not whether I am ready to accommodate the views of others or not ये सब कैरेक्टर कैसे जज होंगे whether I am an honest person or not आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इन सब का लबो लुबाब ये है what is the sum and substance of all this that I said is this that you will be judged on the basis of the questions that you answer not on the basis of questions against which you say sorry. Are you getting me? It seems there is some problem in your video. Yeah, you are back now, I think. Yes, sir. Okay, so why did I make this much of storytelling? Why did I do that storytelling? Because you should know, all of us, we should understand the 3, 4, 5 questions that you know. Take your time to answer them properly because they are going to be the answers on the basis of which your marks will be decided most likely. Okay, so unpe samay lijiye. That was my point. Next, never be disproportionate. Your answer should not be unnecessarily long. Bolte chale ja rahe, bolte chale. No, this is not good. This is also a demerit. I will advise you. It may be your innocent response. It may be the kind of person you are. You are open-minded. You like to interact. You are a jolly person. You like to speak and share your views. That's fine. But strike a sense of proportion. And how do you know कि sense of proportion हुआ कि नहीं हुआ? कब रुक जाना है? How do you know? It's very simple. As a thumb rule, never speak more than 3 sentences. प्रथम बात.
More than 3 sentences you should not speak. 3 to 4 sentences बहुत हो गया, वो भी बहुत ज्यादा हो गया. Okay, first of all you try to answer कि for example एक I think सर ही पूछ रहे थे, हमारे respected जायसवाल sir was asking you burden of proof versus onus of proof. That was his question, if you remember, isn't it? I think you recall burden of proof versus onus of proof. ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया था has it been defined in the evidence act, if I recollect it properly, isn't it? That was his question. Burden of proof or onus of proof, have they been defined in the Indian Evidence Act? That was the question. Okay, what should be the answer? Yes, sir. Yes, sir. No. Your answer should be, sir, as far as I can recollect, they have not been defined. Full stop. Isn't it? I'm giving you It examples. should be very specific. हाँ, general ज्ञान देना तो आसान है, but I have to give you certain examples also so that you can work upon them, isn't it? तो आप concrete कुछ steps ले सके. तो ये एक विजिलेंस और अवेयरनेस दिमाग में रहनी चाहिए कि क्या पूछा है, ये डिफाइंड है कि नहीं. तो है कि नहीं का आंसर होता है यस और नो में. जो क्वेश्चंस वेदर से शुरू होते हैं, क्वेश्चंस विच स्टार्ट विद द टर्म वेदर, इज, आर, इनसे जिनकी शुरुआत होती है उनका आंसर कैसे होता है, यस, नो. लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ब्लंट हो जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी मैच्योरली. लेकिन आप यस और नो बोलेंगे तो वो ज्यादा ब्लंट हो जाएगा कि अरे इतना भी छोटा नहीं बोलना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है ना. देन यू से एक सेंटेंस बोल दीजिए कि सर एज फार एज आई कैन रिकॉल I believe it has not been defined in the Indian Evidence Act. That's it. That's the best answer. End it there because उससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है. ठीक है? Example उसी में. Then sir again asked you after your long answer. Sir asked you what is the difference between the two. You started your answer and you discussed some aspects and at the last you say this is the fundamental difference, sir. Mainly ये difference है. ये पार्ट पहले है आना चाहिए. पहले क्या, सिर्फ यही पार्ट बोला जाना चाहिए कि सर द मोस्ट एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ टू माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग इज द म्यूटेबिलिटी. One is immutable, it never shifts, and the other shifts. When the primary burden is discharged, then it shifts to the other party. And that's it. That is the fundamental point. Okay. फिर if I am not wrong, इसमें आप presumption भी बोले थे that court presumes something this and that and then the person can be relieved from the burden, isn't it? ये सब बताया आपने, मुझे अगर याद आ रहा है तो, कि कुछ certain circumstances में कोर्ट में also presume the existence of particular facts, तो फिर वो उसको साबित करने का जरूरत नहीं है, वो तो presume ही हो. ये सब पूछा ही नहीं गया है. सिंपल burden of proof. आप replay कीजिएगा, you will remember कि मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ. आप जब replay करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये नहीं बोलना चाहिए था. It will help you greatly. Don't worry. Okay. Then this question I'm very seriously addressing this. Acha, there is one more point. At some point, it was 336 or something of that sort was asked. IPC 336 or something. I don't remember. Some section was asked or some problem was given to you, and then you identified a wrong section or provision, and then you remember the correct one. Perhaps this is what happened. Value. Okay. So this was valuable security. You were answering about valuable security. Then you twice you said in the response to the same question, I am sorry sir, and then you said I am so sorry sir, ये मैं गलत बोल गई, something like that. Okay. तो मेरा point इस पर simple सा ये है, yes, absolutely. If you find that yourself incorrect, then you will say कि I am sorry sir, kindly allow me to correct myself. ये तो ठीक है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही apologetic होते जा रहे हैं. That's not needed. It's okay to commit mistakes. Okay, don't be a prisoner of your image of infallibility. Please understand, this is a very deep point. Because you are mature enough to understand, that's why I'm sharing with you. Do not be a prisoner of your image कि मुझसे गलती कैसे हो गया यार. Come on, this is self-flagellation, unnecessary self-flagellation. अपने आप को इतनी सजा नहीं देनी चाहिए इंसान को. It is okay. We are all fallible human beings, and that is fine, perfectly fine. In terms of knowledge, we can always fall. In terms of character, we should be infallible. Knowledge वगैरह तो छोटी बात है, ठीक है. इसका ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं करना, एक बार बहुत है कि I'm sorry sir, may I correct myself? Then you give the correct answer. Okay. और बहुत ज्यादा जैसे एकदम से याद आ गया तो उश्रृंखल नहीं हो जाना है.
आपने बोला फिर आपको याद आ गया, तो आपके जो एड्रेनालिन रश है उसमें दिखाई नहीं पड़ना चाहिए वो कि किशोर सर सॉरी सर मुझे याद आ गया प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना। एकदम उसी कंपोजर से बात करनी है कि सर आई बिलीव आई कमिटेड अ मिस्टेक व्हेन आई आंसर्ड दैट वे, इज इट परमिसिबल फॉर मी टू करेक्ट माई सेल्फ, दैट्स द बेस्ट। और उसमें भी अब देखिए, उसमें भी सावधानी रखिए, दूसरा वाला भी जो आपको याद आया है वो भी गलत याद आया होगा तब तो भयानक बेइज्जती हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इन दोज Yes, sir. सिचुएशंस Yes, you sir. should be very very polite again. Sir, I believe I made a mistake and I think that I have recollected correctly. तो क्या मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ? I believe कि now I have the correct answer. I believe शब्द थोड़ा सा जोड़ देने से आपका स्कोप बचा रहता है कि दूसरी बार भी गलत हो गई तो कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं। That's how we say. Next is, I am particularly dissatisfied with your answer in response. You have already been guided by Honorable Sir. Ujha sir has already guided you, but I would also like to place my 2 cents. That is why you want to become so and so. It can be any service, APO, PCSJ, this and that, whatever it is. Okay. Always remember the correct answers. There can be more than one answers, but all the correct answers, all the possible variants of this answer, all possibilities. कौस्तुभ सर, जायसवाल सर, सर आपका आवाज आ रहा है सर, काइंडली ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ सर। सर ओके, सो हम ये कह रहे थे बेटा कि आप किसी भी सर्विस के लिए अगर आपको वो कहा जाता है कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं, वो क्यों बनना चाहते हैं, सबके आंसर और सबकी परिस्थितियां, circumstances of each and every individual, they will vary, of course they will, and I believe that the best answer is closest to the truth. जो कि सच्चाई हो वही सबसे अच्छा आंसर होता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, इसमें कौन सी चमत्कारिक बात है, ये तो है ही, सच बोलना चाहिए हमको, दैट इज फाइन। बट एक बात पे हम सब एग्री करते हैं, इस पे कोई डिफरेंस नहीं है कि आंसर एस्केपिस्ट नहीं होना चाहिए। What you are aspiring for should not be an asylum or escape from the rest of the world. ये आंसर नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, सोचा यही कर ले, नो। इसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। It should be intrinsic to the service, intrinsic to the profile that should attract you, not extrinsic factor जो आपको push कर रहे हैं। What I am saying, it should be a pull factor, not a push factor. आंसर आपका कभी नहीं होना चाहिए कि हमको जो है बचपन में जो है ये हमारा खिलौना तोड़ दिया था, ये पड़ोसी का जो लौंडा है और अभी जो है वकील बना है तो हम APO बनेंगे, इसका वाट लगा देंगे। You understand my point? So it has to be a pull factor from that service, the profile, your vision of this job. It can be, please don't misunderstand me. It does not have to be a very grand narrative of this thing. कि समाज की सेवा, देश का ये कर देगा. That is there. That should be the part of your answer. But it may not be a very grand narrative. But still, it should be from within the fold of that particular profile. Outside से नहीं होना चाहिए. Outside से बस inspired हो सकते हैं आप, लेकिन उस सर्विस के प्रोफाइल के बारे में जरूर बोलना चाहिए. That's my opinion. Yes, sir, this gives me an opportunity of this. That should be the first line of your answer. Yes, sir, my motivation or my inspiration for this particular service is that I get an opportunity to serve the society or to fulfill my dreams in this way. That is perfectly fine. मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम थ्योरेटिकल टाइप का आंसर दे दीजिए कि इसमें भी जो है वो देश की सेवा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है. This is your vision. You wanted to get into judicial services. You have been trying your best. मैं ठीक से सुन नहीं पाया आपकी पूरी जर्नी जो आपने बताया, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था. But what I could gather is this: you have been trying for different exams, and then you are at a particular age where the options are gradually exhausting. So you have to now take a call somewhere. You have to get settled because of your age and your family circumstances, isn't it? That is what I heard, and that is perfectly fine. That is perfectly fine. But that should not be the primary answer. It can be the secondary answer, appending to the primary answer. बताइए कि sir, I have always have dreamt about serving the judiciary. I am an advocate. अगर practicing हो तो वो बोल दीजिए, नहीं practicing हो तो वैसा बोल दीजिए. I have learned law. I love this subject, and through this subject, I wanted to make a difference in my life also, and to in general to the society. And I have been trying for various opportunities. God has served me with this opportunity that I have in hand, and I'm trying my best. So
this part of the service charms me, that is why I am trying my best. That is the best answer. उस तरह से नहीं प्रेजेंट करना है कि ये हो गया वो हो गया, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा बात है। ये सर्विस मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है जो मेरा जो अपने लाइफ को लेकर जो विजन है उसमें इट फाइंड्स इट्स प्लेस, और दैट इज व्हाई आई एम ऑनेस्ट सिंसियरली ट्राइंग फॉर दिस। दैट शुड बी इट। ज्यादा इसमें नहीं परेशान होने का जरूरत है। फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन अगर होता है कोई कि नहीं तो फिर ये क्यों नहीं कर लिया, वो क्यों नहीं कर लिया, तो बोलो कि सर, कंसिडरिंग ऑल माय सर्कमस्टेंसेस I took a call that I should appear for this examination, and I am very much subject to correction. My decisions may be wrong, but at this point of time, I have taken a well-informed decision on the basis of my and my family circumstances, sir. And correction in this decision is always possible. And जो है इसीलिए at this point of time, I'm trying my best. बाकी जैसे ईश्वर की इच्छा हो, that is how it is. तो ये आपको जॉब वाला आंसर स्कोरिंग आंसर होता है, रिमेंबर दिस। जो ये जॉब वाला क्वेश्चन होता है ना, ये क्यों करना चाह रहे हो, वो क्यों करना चाह रहे हो, यही पॉइंट होता है। दैट इज वेयर दे से ऑन द मनी। तो ऑन द मनी का मतलब यही है, वो जिसपे जो लूज डिलीवरी आती है, जिसपे सिक्सर मारता है बैट्समैन, तो वो ये सब क्वेश्चन होते हैं। जो आपके जॉब प्रोफाइल से पूछे जाए क्वेश्चन, जो आपके बायोडेटा से क्वेश्चन पूछे जाए, आपके बैकग्राउंड से जो सवाल पूछे जाए, उनमें हाईएस्ट स्कोर करने की पॉसिबिलिटी रहती है, और उसमें सिर्फ 2 ही चीज शो करना रहता है, दैट इज ऑल। शब्दों का whatever words you select, whatever phraseology you want to use, I leave it upon you, but these two attributes of your personality should come in your answer. Number 1, honesty. Number 2, empathy. That has to be there. Honesty और empathy आ जाना चाहिए कि आप समाज के लिए ठीक है करना चाह रहा है, it's okay, let us give her a chance. इतना फीलिंग आपके इंटरव्यू पैनल को नमस्ते करके उठने पर जब आप जा रहे हो कि थैंक यू सर, उसके बाद उनके दिमाग में बस ये इंप्रेशन रहना चाहता है कि ठीक है, लेट अस गिव हर अ चांस, शी इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड ठीक है, शी इज अ गुड कैंडिडेट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आप सोचेंगे कि मैं कन्विंस कर दूंगा, मुझे इतना नॉलेज है, ये सब बेकार की बात है। अल्टीमेट लास्टिंग जो लास्ट इंप्रेशन है, उनको ये होना चाहिए कि गुड कैंडिडेट, झूठा नहीं, बदमाश नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है अपरेंटली, और मेहनत किया है, यहाँ तक आया है, और सच साफ साफ बात बोल रहा है, कोई घुमा पिटा के इसे नहीं कर रहा है, और बातचीत करने लायक है। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, भाई आप असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, ऐसा ही कुछ नाम है ना इसका, एपीओ का, तो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह भी तो थोड़ा ठीक होना चाहिए ना। हाउ वुड यू असिस्ट, यू शुड हैव दैट सेट ऑफ स्किल्स, बस दैट इज ऑल। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ स्किल सेट दिख जाए, ट्रेनेबिलिटी दिख जाए कि इसको सिखाएंगे तो ये सीखेगा, ये क्लोज माइंडेड नहीं है, ओके। और 2 चीजें दिख जाएं कि ऑनेस्ट है भाई, बोल ठीक है, कैंडिडेट है, एकदम स्ट्रगलिंग कैंडिडेट है, मे बी गिवन अ चांस, वो तब इससे ज्यादा नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। आप आंसर्स को शॉर्ट रखिए, और कभी भी 10 के 10 का जवाब मैं दे के आऊंगी, ये मेंटालिटी लेकर जाने की जरूरत है। 3 to 4, दैट्स ऑल। इतना दे पाए तो खुश रहिए कि उतना में मेरा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आदरणीय सर लोगों के गाइडेंस में मैंने भी जो कुछ सीखा है, तो मैं समझता हूँ इंटरव्यू पैनल का मेंटालिटी, तो बहुत ज्यादा इस पर ना परेशान हुए कि 5 बता पाए, 5 नहीं बता पाए, इट्स ओके। जो 5 बताए उसको, ये जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको उसका पालन करते हुए यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, एंड दैट शुड सफाइस, दैट शुड सेव योर डे। आई थिंक दैट विल बी एनफ फ्रॉम माय साइड। मैं बहुत ज्यादा अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसी सवाल के जवाब में आपने, मैं फिर पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन आपने शब्द ऑनेस्ट यूज किया था, व्हाई यू वांट टू बिकम एन एपीओ। इसी सवाल के जवाब में आप बोले थे कि आई वांट टू बी ऑनेस्ट, या टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ बोले थे सर। मेरे लिए सबसे ज्यादा हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फ्रेज आपने यूज किया था, ऑनेस्ट शब्द आपके आंसर में कहीं आया था, है ना? तो ऑब्वियसली आप इस सवाल के जवाब में बोल रहे हैं कि आई टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब बाकी सब ऐसे ही था, बाकी जो पहले सवाल पूछे गए वो दैट इज अननेसेसरी फ्रेज ना। यू गॉट माय पॉइंट। नेवर से टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, नो, ये दैट्स, बुजुर्गों से ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं किया जाता है, अपने एल्डर लोगों से। इट इज गिवन, इट इज अ गिवन कि आप ऑनेस्टली ही बोल रहे होंगे, तो ये बोलने का जरूरत नहीं है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, टू बी ऑनेस्ट, दरअसल सच्चाई ये है कि ना, जस्ट से इट व्हाटएवर इट इज, ओके। तो ये फ्रेज कभी यूज नहीं किया, दिस इज डेंजरस, इसको नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा एक चीज और देखा मैंने, 2 पॉइंट अब याद आ रहे हैं, तो मैंने लिखने में रह गया था, लेकिन वो आपका गलती, मैंने उतना नहीं मानता हूँ। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें लैग हो रहा है, सो दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट मेरा जिम्मेदारी है कि आपको वार्न कर दूं कि जब आप फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, आमने सामने जब उनका इंटरव्यू दे रहे होंगे, नेवर कट शॉर्ट अ पैनलिस्ट।
उनको पूरा बोल लेने दीजिए। कई बार वो एक छोटा सा पार्ट और होता है उनके क्वेश्चन का, कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ। अब फिर 4 सेकंड का गैप हो गया, फिर वो पूछ रहे हैं कि एंड व्हिच वन शिफ्ट्स, ऐसा पूछ सकता है ना। पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ, तो उसमें 2-3 सेकंड का गैप उन्होंने ही ले लिया, और फिर वो बोले दूसरा क्वेश्चन बोले, अब पता चला आप इसी बीच में आंसर शुरू कर दिए, तो वो क्लैश हो जाएगा ना, आंसर आपके आंसर का उनके सेकंड पार्ट का क्लैश हो जाएगा, ये गड़बड़। तो वो लगेगा कि तुम बात काट रहे हो उनका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का है अपने। सो वहां पर एक्सप्रेशन को रीड करना है कि इनका हो गया या कुछ और बाकी है, और वैसे भी आपको 2-3 सेकंड का गैप तो लेना ही है, तो जब आप वो गैप लेंगे तब तक आप उनके एक्सप्रेशन को रीड करेंगे, तो ये गलती नहीं होगी, ये गलती कभी नहीं करनी है कि यू कट शॉर्ट पैनलिस्ट, इससे पहले कि क्वेश्चन उनका पूरा हो आप बढ़ाने लगे। नो, डोंट डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, on this aspect only, very closely related, never contradict yourself and never argue with the panel। बता भी चुका हूं, उस दिन भी बताया था, आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं कि कभी भी आर्गुमेंट में नहीं एंगेज करना है अनलेस दे वांट योर आंसर। कभी भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि लेकिन सर इस वाले किताब में तो ये भी लिखा। नो, डोंट डू दैट, ऐसे कभी नहीं करना है। अगर किसी पॉइंट पे आपका दिल कहता है कि आप सही बोल रहे हैं और वो आपको वो कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा आंसर है कि सर then maybe I need further study on this. This is what I believe to be true and correct. But if the honorable panel is saying this, if your kind self is saying this wise, then I think I need more study on this. चाहे जितना मन में करोगे, मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन इसको अभी सबक सिखा दे, ये सब नहीं, परेशान कर रहे हैं पर जी मुझे, ये सब भाव नहीं लाना, ठीक है। नहीं, कभी आर्ग्यू नहीं करना है, कभी अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना है, और कभी कॉन्ट्रोडिक्शन पकड़ा जाए तो एक्सेप्ट कर लेना है बहुत ही शांति से। Sir, maybe my choice of words may have made an image of contradiction. I think I need more study on this. That's all. इससे ज्यादा नहीं करने का। That will be all from my side. और हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है समझ में, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ। प्रिया जी, आप इतने मोटा मोटी समझ लिया होगा। देखिए क्या है कि लेट मी व्हाट शोर हैज सेड, लेट मी एक्सटेंड a bit more. Most of the things Shore has already said. 3-4 things are important for any interview. The most important thing in interview is just listen question carefully. If you fail to listen question, then no point in answering it, because you will answer 100% the wrong one. Second, you confine the operating part of the question. If what I observed to you, you miss the operating part of the question. You qualified some mails earlier also, you prepared interview also earlier time, you try to analyze that interview, what mistake you did. We are running this channel or this venture only to help you all, so that you should not commit any mistake in interview board. You commit mistake here, we will try to rectify it, we will try to clarify it. You have potential to be selected, no doubt about it. You have a lot of good qualities. You are a mother of the 7-year-old child. You have been 5 times mains. You are struggling hard. You want to make your own life. It itself shows that you have a lot of metal inside you. Whenever anybody will see your biodata, your profile, he will impress with you. The only reason for impressing, you are struggling. You want to make want to make something in the life for yourself. Then now next job is started for you. You try to capitalize on it. If you will not listen question carefully, if you not answer the operating part, then whatsoever the mileage you have gained by your own profile, you may lose it. Always answer crisp. Always. If you don't know the question, you said sorry. Interview board mainly interested to listen what you are saying. You want to analyze that. This is one of the very important reasons. Probably you have not been mentored by someone else earlier. I can understand by your answer. Sir, I have never taken. Any course I guess it. any kind of guidance. Yeah, you are very raw. Nobody has mentored you. Nobody has guided you. That's why these basic mistakes are going to happen. कब आपका इंटरव्यू है? इंटरव्यू 4 तारीख को है।
चाहे आपको है, we will repeat your mock again. We want you to be selected. You listen this video again. After that, we will again repeat your mock. I want you to be selected. You deserve it. And just try to see more. We convinced the faculty to take classes regularly. You just attend their classes. Jaswal sir and Anu sir is taking classes. I do not you appear a lot because I was not able to join their classes. You attend the class. After 3, 4, 5 days, around the 26, 27, you will repeat your mock. Any question you want to ask? No, sir. This was the only question, that why do I want to become an APO was a point of dilemma for me. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यही एक क्वेश्चन है जहाँ पे मेरा आंसर अच्छा साउंड नहीं करेगा बोर्ड को, एंड फॉर द वेरी सेम रीजन आई ट्राइड गिविंग माय आंसर इस सवाल को ऑनेस्ट मैनर, ताकि मुझे इसका प्रॉपर। जी सर। क्या देखो, ये सवाल हर इंटरव्यू बोर्ड होता है. Why you want to become IAS? Why you want to become PCS? Why you want to become judge? Why you want to become APO? We also have experienced this answer when we were preparing for own examination. So this need to be prepared. You prepare the answer of this. अगर आप ये आंसर करती, I want a job, what's wrong in it? I don't think anything wrong in it. Because I want a job. I want to be self-independent. I want to take care of my kids by own means. There are so many answers. Don't give a very idealistic answers. Always go to practical. It's a practical answer. It's a reality also. कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, आप अपने बच्चे का बेहतर केयर करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहते हो. आप जोड़ो ना, ये 4, 5, 6 लाइन पे आप रुक जाओगे. आप बाद में भी कर सकते हो कि सर दिस इज द जॉब वेयर आई कैन हेल्प टू द सोसाइटी. आप एपीओ रहोगे तो क्या आप प्रोसिक्यूशन में काम करोगे. तो सरकार उन लोगों को पकड़ती है जो लोग अपराध करते हैं, उनके साथ वो लोग छूट जाते हैं. तो इफ यू हैव अरेस्टेड एनी पर्सन एंड नॉट एबल टू कन्विक्ट देम डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अ क्रिमिनल, देन इट इज अ बर्डन टू द सोसाइटी. यू वांट टू डू दिस आल्सो. But you see the series, this part need to come at last because it is not suiting a profile like you. आप उसको बोलो हम सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं. Then look come last sir, I want to go to the society also. When he asks you what do you help the society, this is answer. Okay, sir, every day is a crime with the children, with the women, with the older people, with the innocent people. Person who is being caught by the prosecution is caught free. I want to ensure that. I want to work on that. That I represent the cases. I put up the case in this way, so that the justice may be done with them. Justice may be done with the society. Got it? अब आपने जो आंसर किया, आप इससे कंपेयर करना कि आपने क्या आंसर किया है. इसी आंसर को आपका फिर रिपीट करेंगे. और कोई सवाल? सर और कुछ है इनमें? Yes, sir. I want to tell her right in the beginning, so that I am clear in my conscience that I told her right now, so that she has time to think about it. See, my reading of you, an honest reading of you as a senior colleague, is this: that you have taken a lot of performance pressure on you, especially the performance pressure of, I think, family or friends or whatever. So a lot of performance pressure is there behind the back of your mind. कि अब नहीं तो अब क्या करेंगे, ये तो अब होना ही चाहिए, 4 साल ये हो गया, वो हो गया, इस तरह का चीजें जो है दिमाग में. दैट इज व्हाई यू गिव दैट आंसर इन द फर्स्ट प्लेस. So to be very honest with you, these kind of thoughts, they are going to only harm you. They will not help you. So you shed them. Actually, it is okay. Life is, मैं कोई philosophical ज्ञान नहीं देना चाहता. This is a very limited purpose interview, but somehow my soul says that I should tell you, life is not fair. Life is only reasonable. Remember this. So it is okay.
You get selected or not, it's okay. Accept it. Accept it that there is a possibility that I will not get selected in this also. Okay, your dharma is in kartavya, and that is it. Leave it there. Do not take unnecessary pressure on yourself, please. It's my request. I have seen people committing blunders because of this pressure. That's why. It's okay. We are already very proud of you. You should know this. In limited interaction of say half an hour or so, we are already very, very proud of you, what you have achieved in your life. So that's okay. And if, in fact, if I were you, I will tell you, I don't care about this also. If somebody is proud of me or not, I don't care. Just thank Almighty that you could do this, and that ends. उसके ज्यादा सोचेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाएगा. जो आज हुआ, जी वही वो भी बहुत बड़ा कारण है आज जो हुआ उसका. So don't worry. So I think Priya, performance pressure is the part of the life. Everyone has someone has the more, someone has the less. Your age is crossing it. You are qualified for means you are not able to get the job. It may be enhancing it, but the best way is that कि है ना कहावत है ये रामचरितमानस की, वही है वही जो राम रचि राखा. और दूसरा एक हरिवंश राय बच्चन की लाइन है जो इलाहाबाद बड़े फेमस में है कि जो आपके मन का हुआ वो अच्छा, जो आपके मन का नहीं हुआ प्रभु की अच्छा, वो और इच्छा और अच्छा हुआ. अमिताभ बच्चन ने भी वो लाइन मुझसे कोट की थी, मुझसे बोला था कि जब मेरे मन का कुछ नहीं होता तो मैं ही अपने बाबूजी की लाइन याद करता हूँ कि जो हमारे मन का हुआ वो अच्छा है, जो हमारे मन का नहीं प्रभु बहुत अच्छा है. तो अगर मान लीजिए इन केस यू आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, then might be possibility God is thinking something else for you. तो लीव दैट परफॉर्मेंस. दूसरा एक बात और है कि कई बार नियतिवादी होने का फायदा भी होता है. जो होना है वो निश्चित है, ओनली वी हैव टू विटनेस इट. मान लो रिजल्ट आना है 7 नवंबर को, फॉर एग्जाम्पल 7 नवंबर को क्या होना, इट इज फिक्स्ड. वी कैन नॉट चेंज इट, ओनली वी कैन विटनेस इट. आवर जॉब इज ओनली टू वर्क हार्ड, to try to do better and enjoy this experience. It's also a very good opportunity experience. आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, ये हम दोनों के लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है. हम तो हमेशा कहते हैं कि जो एस्पायरेंट मिलते हैं मुझको सिखाते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड. आई एम गेटिंग एस्पायरेंट्स टू टॉट देम, टू ट्रेन देम, टू मेंटर देम. आपके हमारे बीच और कुछ तो है नहीं. आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते, इसके अलावा तो कुछ है नहीं. आप कल चले जाओ, हम आपको ट्रेस नहीं कर सकते. हम कल चले जाए, आप हमको ट्रेस नहीं कर सकते. हमारे आपके जो संबंध का स्थापना हुआ है वो एक प्रेम का संबंध है, एक सौहार्द का है. उसका आधार क्या है? वी बोथ वांट टू लर्न समथिंग. यू आल्सो वांट टू लर्न समथिंग, आई आल्सो वांट टू लर्न समथिंग. जैसे मैं अपसेट होता हूँ कि कोई बोलता है हमको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मैं बिजी हूँ, मैं मॉक नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास ईयरफोन नहीं. मैं वो ईश्वर बोलता है, ईश्वर को सद्बुद्धि दो. अगर ये अपने फ्यूचर के लिए इतने ज्यादा लापरवाह है कि कौन मदद कर सकता है? आप सोचिए, हम लोग नौकरी करते, बस समय नहीं है. अपने समस्याओं को आज बस समय में, आई रिक्वेस्ट श्योर कि आप संभालो, मैं आता हूँ. जो 2 आईपीएस अफसर है दोनों मीटिंग में है, वो आ नहीं पाए हैं. वो यू ट्राई टू सी आवर ओन कंपल्सन. उसके बाद आप लोग खाली रहते हो, आपके पास आपको माइक नहीं मिलता है, आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, आप ट्रेवल करते हो. One of the aspirant yesterday messaged me, I am traveling so I cannot join. I can't believe this. One of the aspirants said yesterday, I am not ready. Give me another date. इसी में आप लोगों में 10, 12, 15 अच्छे लोग मिलते हैं जिसमें आप एक शामिल हो कि हम लोग को अच्छा लगता है, आप गर्व होता है कि आपसे मिले. बेटा आराम करो, एंजॉय करो, अपने पति बच्चे के साथ अच्छा समय बिताओ, निश्चिंत हो के आप रहो. हमारी क्लास ज्वाइन करो, पढ़ाते हैं. आपका एक बार मौका और लेंगे, ईश्वर चाहेगा तो कल्याण जरूर है. और कोई सवाल आपका? कुछ बोलना चाह रही थी 2 मिनट. आई नो आई टॉक टू मच बट हाँ जब बोलो. सर मेरा एक डरमा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने कभी भी कोई गाइडेंस लिया नहीं है, वैसा बहुत किया नहीं. नोट्स के लिए ऑल्सो आई डोंट रिलाई ऑन दी मार्केट नोट्स बाय मेकिंग माय नोट्स. मतलब मैंने लगभग स्टडी पे ही ज्यादा फोकस किया. तो अब तक मैंने कभी इस तरह का कोई गाइडेंस लिया नहीं. तो मेरा इस क्वेश्चन पे हमेशा एक कंफ्यूजन रहता था कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जज, या व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एपी. तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे मेरा आंसर बहुत ही ड्रामेटिक हो. तो थ्रू दिस बोर्ड आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, मैं चाहती थी कि मैं अपना एक ऑनेस्ट आंसर दूं
इसलिए मैंने ये कहा कि मैं एक ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ, और मैं सच में चाहती थी कि आप लोग इस चीज के ऊपर में मुझे रिस्पॉन्ड करें, मुझे बताएं कि व्हाट वर माय रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। और आई और मुझे अभी कॉन्फिडेंस है, नाउ आई आई बिलीव दैट आई गॉट माय आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। आप लोगों ने इतना ज्यादा उस क्वेश्चन के ऊपर में वर्क किया कि नाउ आई विल बी एबल टू आंसर इन अ बेटर वे। और मैं कहीं से भी मेरे कंडीशंस को डिनोट नहीं करना चाह रही थी। इट इज ऑल्सो नॉट दैट कि आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनेशन से करके, बट यस, टाइम मेरे लिए अब खत्म हो रहा है। देख, और प्रिया क्या है ना, अपने बैकग्राउंड को अननेसेसरी नहीं बताने का। जी सर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नाउ आई गॉट द आंसर सर। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैंडीकैप, फॉर एग्जाम्पल, ओके, I should not try to highlight it, because if I try to highlight it without any reason, then it is my inferiority complex. Yes. If they ask to answer it, but unnecessary highlight नहीं करने का, किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं करने का बिना मतलब में। आपके साथ प्लस ठीक है पॉइंट सर। क्या है, आप एक गर्ल हो, आप एक मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास से आती हो, आपने 5-6 साल मेहनत किया है, आप यहाँ तक आई हो। ये इट्स सिर्फ आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये बगैर हाईलाइट किए हाईलाइट हो चुका है। इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, कैश कर सकते हो। कैसे? एक बेहतर आंसर देके, बेहतर कुछ इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन करके। मैं बताता हूँ, अगर आप अच्छा इंटरव्यू दोगे और आप अगर कोई दूसरा इंटरव्यू दोगे, आपको मार्क्स ज्यादा जरूर मिलेगा। मैं एक लड़का लेता हूँ 22-23-24 साल का, एक आप लेता हूँ, दोनों का इंटरव्यू सेम होता है, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। बिकॉज you have inherent plus point in your personality, by your struggle, by your perseverance, by your outlook, by your innocence, so many things you have। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप अच्छा आंसर दोगे। अच्छा आंसर दोगे तो काम नहीं करेगा। गॉट इट? और कुछ? जी सर। नहीं सर, नेक्स्ट सर हो मॉक गया? में यू विल गेट टू, आपको अच्छा आंसर मिलेगा सर इस क्वेश्चन के लिए। चलो चलो, थैंक यू सर। हो गया? और कुछ है? बाय। थैंक यू भैया, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट।